Hello everyone, myself Ruchika. I am Assistant Professor in Commerce at Shree Atam Vallabh Jain College. Today I am going to discuss the topic that is Factory Act 1948. First of all, we will understand what do you mean by factory. A premises where 10 or more persons are engaged if power is used, or 20 or more persons are engaged if power is not used in a manufacturing process under section 2 subsection M. यानी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन M के अकॉर्डिंगली फैक्ट्री का मतलब क्या है? ये वो प्रीमिसेस है जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं अगर पावर यूज हो रही है, 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं अगर पावर यूज नहीं हो रही. Now we will understand why there is a need of the Factory Act. In Great Britain, the second half of the 18th century, there was a rapid growth of the industrial towns and factories. As it was started without planning, they employed the women as well as the children in the factory who needed to work for more than 12 hours a day. Some of the employees took initiative to implement labor legislation. Factory Act came into existence in the 1890. After some modification, the final amendment of the Factory Act took place in 1948. So इसमें ये बताया गया है कि बिना किसी प्लानिंग के जब ब्रिटेन ने ये स्टार्ट किया इंडस्ट्री की ग्रोथ के रिगार्डिंग, तो वहां पे उन्होंने वुमेन और चिल्ड्रन को भी काम पे रखना शुरू कर दिया, क्योंकि एक दिन में 12 या 12 से ज्यादा घंटे काम करते थे. तो यहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे, ना ही वर्किंग आवर के रिगार्डिंग, ना ही लीव के रिगार्डिंग, ना ही एज लिमिट के रिगार्डिंग. सो ये चीजें देखते हुए ही फैक्ट्री एक्ट है वो पास किया गया 1948. क्या मेन ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का? First, the act has been enacted primarily with the object of protecting the workers employed in factories against industrial and occupational hazards. For that purpose, it seeks to impose upon the owner or the occupier certain obligation to protect the worker and to secure for them employment in the conditions conducive to their health and safety. सो वर्कर की प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट पास किया गया ताकि जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ और वेलफेयर के बारे में भी देखा जाए. नेक्स्ट, दैट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. At any place where manufacturing process is carried on with or without the aid of the power, or it is ordinarily carried on notwithstanding that number of the persons employed there is less than 10. If working with the aid of the power, and less than 20 if working without the aid of the power. The person working therein are not employed by the owner thereof, but are working with the permission of or under the agreement with such power. So first of all, we will discuss that is the health provision, जो कि आती है section 11 से 20 के अंदर. Chapter 3 of the Factory Act contain details regarding the health of the workers. Now let us discuss these provisions. First provision, that is the cleanliness. Section 11 के accordingly, the working condition should be clean and safe. Second, clean the floor at least once a week by washing or by some effective method. Third, effective means of drainage shall be provided. Whitewash every 14 weeks, paint or varnish every 5 weeks. Next, disposal of waste and effluent. Section 12. There should be proper arrangement of the disposal of waste or the effluents following the state government rule. यानी फैक्ट्री से जो वेस्ट और effluents निकल रहे हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना जरूरी है, अदरवाइज दे विल क्रिएट द पोल्यूशन. और इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं दैट हैव टू बी फॉलो. नेक्स्ट, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर. सेक्शन 13. प्रॉपर लेवल ऑफ वेंटिलेशन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मस्ट बी मेंटेन्ड. मेक प्रिवेंशंस फॉर रिड्यूसिंग एक्सेस हीट. Next, dust and fume. Section 14. Effective measures should be taken to prevent inhalation or accumulation of dust and fume. If any exhaust application is necessary for, it shall be applied as near as possible to the point of origin of the dust, fume, and the impurity. Next, artificial humidification. Section 15. Factory act in which humidity of the air is artificially increased, like in textile unit, keep in its limit. यानी जहां पे आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन की जरूरत है तो कितनी वो क्रिएट करनी है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जरूरत होती है तो उसकी एक लिमिट फिक्स होनी चाहिए. वाटर यूज फॉर द आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन शुड बी क्लीन.
Next, overgrounding under section 16. 14.2 cubic meter space for per worker. While calculating this space above the worker beyond 4.2 meter will not be taken into account. Notice specifying the maximum number of the worker which can be employed in any workroom shall be displaced in the premises. Next, lighting, section 17. Sufficient and suitable lighting in every part of the factory. There should natural lighting as far as possible. Next, arc-glazed windows and skylights should be used for lighting. The workroom shall be kept clean. Formation of shadows to such extent as cause to eye strain or the risk of the accident to any worker shall be prevented. So अगर प्रॉपर लाइटिंग होगी तो ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट्स के चांसेस भी कम होंगे. रीजन ये है कि वहां पे शेडो नहीं बनेगी वर्कर की एक दूसरे के ऊपर. सेकंड, आई स्ट्रेन है वो कम हो जाएगा. ड्रिंकिंग वाटर सेक्शन 18, ये हम सबको ही पता है, दैट इज वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो जो ड्रिंकिंग वाटर है दैट शुड बी क्लीन. देयर शुड बी प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी. देन ड्रिंकिंग पॉइंट टू बी मार्क्ड एज ए ड्रिंकिंग वाटर. They should be at least 6 meters away from the washroom, urinals, latrines and spit-ons. If 250 से ज्यादा वर्कर हैं that are working, they have pool water facility also. Because हमें पता ही है पीने की पानी की जरूरत हम सबको है. तो ये पीने के पानी का जो प्रॉपर लेबल लगा होना जरूरी है कि दिस वाटर फॉर द ड्रिंकिंग, और ये वॉशरूम यूरिनल के नजदीक नहीं होना चाहिए. Next, under section 19, latrines and urinals, they should be separate for male and female, and proper cleaning should be there. Next is that is your spit-ons, section 20. There should be sufficient number of the spit-ons. No person shall spit within the premises of a factory except in the spit-ons provided for the purpose. Whoever does spits in the contravention shall be punishable with a fine not exceeding 5 rupees. यानी जो वर्कर्स है जो स्पिट करेंगे वो पर्टिकुलर जो प्लेस बना होगा वहीं पे स्पिट करेंगे. अदरवाइज अगर वो करेंगे किसी और जगह पे तो उन्हें फाइन है वो पे करना पड़ेगा. सो ये थी सारी प्रोविजन रिगार्डिंग हेल्थ के रिगार्डिंग. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे दैट इज वेलफेयर के रिगार्डिंग प्रोविजंस. वेलफेयर के रिगार्डिंग सेक्शन 42 से लेके 50 तक की प्रोविजंस है वो बताई गई. First, under section 42, washing facilities. There should be washing facility in every factory for the workers, separate for male and female workers, properly screened, conveniently accessible and shall be kept clean. Facility for storing and drying of clothing, section 43. There should be facilities so that the worker can place their clothes not worn during the manufacturing process. There should be facility worker can dry their wet clothes. कि जो वर्कर्स हैं उनका अगर काम ऐसा है कि उन्होंने अपने क्लोथ्स है वो चेंज करने हैं तो उसके लिए प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए जहां पे वो अपने कपड़े हैं वो रख सके. फैसिलिटी फॉर सिटिंग, सेक्शन 44. ये प्रॉपर अरेंजमेंट होना जरूरी है. जो वर्कर काम कर रहे हैं कि वो सारा दिन खड़े ही ना रहे. अगर उनके पास टाइम है दे कैन सिट, और प्रॉपर सिटिंग फैसिलिटी होनी जरूरी है. फर्स्ट एड अप्लायंसेस. There should be at least one first aid box for every 150 workers. क्योंकि फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो कई बार कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स का होना जरूरी है. और इसके ऊपर प्रॉपर प्रिस्क्राइब लिखा होना चाहिए कौन कौन से इसमें कंटेंट्स हैं, और ये उस पर्सन के पास होना चाहिए जिसके पास फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का सर्टिफिकेट हो. एम्बुलेंस रूम होना जरूरी है अगर वर्कर 500 से ज्यादा काम. नेक्स्ट इज कैंटीन, सेक्शन 46. If the number of workers is more than 250, government may make the rule for the canteen. Government may make the rules regarding food stuff, construction, furniture, equipment of the canteen. Next, shelter, restroom, lunchroom. क्योंकि वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनके बैठने की जगह के साथ साथ जहां पे वो खाना खा सके वो भी होने चाहिए और ये प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए. Next is your crèches, that is section 48. ये फीमेल वर्कर्स के रिगार्डिंग है कि अगर आपकी फैक्ट्री में 30 से ज्यादा फीमेल वर्कर काम कर रहे हैं तो क्रैच फैसिलिटी होना जरूरी है. यानी जो फीमेल जिनके बेबीज छोटे हैं वो अपने बेबीज को वर्किंग आवर के टाइम पे वहां पे छोड़ सके. और ये जो क्रैचेज है प्रॉपर जो है ट्रेन वुमेन के अंदर होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेटेड और क्लीन होनी चाहिए. सेक्शन 49, वेलफेयर ऑफिसर, कि अगर आपकी फैक्ट्री में 500 से ज्यादा वर्कर काम कर रही है तो वेलफेयर ऑफिसर का होना जरूरी है जो कि वर्कर के वेलफेयर और भलाई के बारे में सोच सके.
सो इन नटशेल क्या बताया गया, क्रैचिस कहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ 30 से ज्यादा वुमेन वर्कर काम कर रही हैं। रेस्ट रूम और लंच रूम कहाँ होने चाहिए, जहाँ 150 से ज्यादा वर्कमेन काम कर रही हैं। कूल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी कहाँ होनी चाहिए, जहाँ 250 से ज्यादा वर्कर काम कर रही हैं। कैंटीन 250 से ज्यादा वर्कर्स के लिए। एम्बुलेंस रूम 500 से ज्यादा वर्कर्स के लिए। वेलफेयर ऑफिसर 500 वर्कर्स के लिए। और लेडी वेलफेयर ऑफिसर जहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन ज्यादा काम कर रही है। सो ये था टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग द वेलफेयर और हेल्थ के रिगार्डिंग की